अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ आमिर कुरैशी जी। मैं आज आपको जो कुछ बताना चाह रहा हूँ जो वो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में है एंड हाउ डज़ इट इंटीग्रेट इनटू योर built environment, the development of real estate, the operations of real estate, and how to future-proof the investments that you're going to do in technology, in equipment that is going to go into that building. So I'm going to take you to a journey which is not 5 or 10 years, but beyond that. It Hello. is what the Hello. operations Hello. people do, and I am from operations. So, I'm going to be talking to you about technology which you're right now, contemplating Hello. कि जी आप वो इसमें investment करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको ensure कैसे करेंगे कि वो technology जो है वो आगे चले, ये ना हो कि वो failure हो उसका. So future proof करने की कुछ मैं बात करूँगा. ये मेरा जी agenda है for this keynote address. A bit about myself. I am actually an ex-CEO of a company called CBRE in Pakistan. 12 साल रहा हूँ. और CBRE is the world's largest real estate company and facilities management company. So I managed that company here in Pakistan for about 12 years. मैं engineer हूँ और mechanical engineer और LUMS से मैंने MBA किया हुआ है और about roughly 33 years का मेरा job experience है. मुख्तलिफ companies में रहा हूँ, regional management भी की है कुछ मुल्कों की. So मेरा जो area of expertise है जी वो facilities management है. I do a lot of consultancy now for my clients in the US and Europe. पाकिस्तान में इतना इसकी अवेयरनेस नहीं है, सो इस वजह से यहाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. लेकिन फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का जो स्कोप है अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ अबाउट $1.3 trillion. एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में we still talk about facilities management as admin या MEP या maintenance. So it goes beyond that. It is a much more diversified, much more inclusive kind of a management faculty. इसके ऊपर PhDs हो रही हैं बाहर के मुल्कों में, masters and bachelors. So ये मेरा थोड़े से credentials हैं जी, which I wanted to share with you. And this is my some of my background. Basically आजकल जो मैं यहाँ पाकिस्तान के लिए contribute कर रहा हूँ, I have I regularly blog on LinkedIn, and I also am operating a facilities management Pakistan के नाम से एक LinkedIn का page कर रहा हूँ जिस पे about 700 to 1,000 लोगों के ये active group है और जिसमें contributions होती रहती हैं. So I'm bringing together all the facilities managers in Pakistan. Who knows about facilities management? किसी ने पहले सुना हुआ है इसके बारे में? May I know? Yeah, a few of you. Not many people know about it, and not many people are aware of the importance of facilities management. So I'll just take a few minutes. कि what is it? So facilities management जो है is it's a concept जो कि CRES से आता है. CRES भी एक science है जो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट सर्विसेज की साइंस है जिसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं जी. आपका रियल एस्टेट का बिजनेस जो मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट, नॉट द कंस्ट्रक्शन साइड, द मैनेजमेंट साइड आफ्टर यू हैव कंस्ट्रक्टेड. देन यू हैव फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये CRES कहलाता है. कॉमनली ये समझा जाता है कि ये तीनों जो वर्टिकल्स हैं, ये तीनों जो क्या कहते हैं फैकल्टीज़ हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं. बल्कि ये ऐसी कोई बात नहीं है. ये बेसिकली ऑल ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. सो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट फैकल्टीज़. सो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जी वो ये है कि एनीथिंग विच इज़ नॉट द कोर बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट पीपल. So इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं. पेस्ट कंट्रोल है, HVAC है, ये क्या कहते हैं अपना क्लीनिंग है. ये सब कुछ जो है ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के एम्बेट में आता है ये सारा. ज़्यादा इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये मैंने आपके सामने लिख दी है. बेसिकली जो
जो इसको जिसको चीज़ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये कोर फंक्शन ऑफ अ कंपनी जो है उसको सपोर्ट करता है। कोशिश ये होती है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका KPI है, is to enhance the image of the company. So that is one of the things that we are trained to do from day one. आपको मालूम होगा ये कुछ कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखी होंगी, ये all of these are part of the facilities management scope of services. So I'm good at this. I've been doing this for a lot of years now. So इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर प्रूफिंग कैसे करनी है, I need you to realize what the total cost of ownership of a property is. The total cost is not the construction cost. It is way beyond that. And this I took out from Fortune magazine just 2 days ago, इस presentation के लिए. The total cost is this, जिसके अंदर about 6 to 7% is just the planning cost. The construction cost about 20 to 40%. But actually जो problem पड़ता है वो 60 to 80% जो है वो problem पड़ता है operation side पे, जो कि 20 साल चलती है, 40 साल चलती है, पाकिस्तान में 50 साल भी चलती है आपकी operation of a building. So you're talking about 1 to 2 year span of planning, 1 to 4 year span of construction. But what do you do after that? Let's say आप 10 साल के बाद उस बिल्डिंग के साथ क्या करेंगे? आप आज किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, क्या 10 साल बाद उसका क्या हाल होगा? This is the perspective I would like you to take. The exhibits that you see outside and some of the technologies that are going to be discussed today have an impact for 4 years, 5 years, 10 years. But what happens after 10 years? What happens at 20, 30, 50 years from when you bought that technology, bought that innovation? वो facilities management वालों को उनको उसको cater करना पड़ता है. So this is a very good representation of what the total cost of a developer owner या developer operator की total cost क्या होती है किसी भी क्या कहते हैं अपना venture के लिए. So you need to keep that in mind when you're doing your REITs, when you're investing in your software, when you're buying Internet of Things, when you're doing smart technologies, integrating those. So think not in terms of here and now, 5 से 10 साल नहीं, 20 years from now. That's something that you need to look at, because it's the facility manager who's going to manage it, who's going to operate this. Okay, so here's some write-up on this. I can skip that. Okay, how to future-proof. Now we come to the main topic of my presentation over here. कि किस तरह कर सकते हैं आप इसको अपने investments को future-proof कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो जी आपको अपनी existing जो FM के operations हैं उनको modernize करने की जो ज़रूरत है. उसमें उसके FM के operations जो आपके अभी चल रहे हैं वो structure, policies, processes, strategies, targets and initiatives. But you are right now operating in silos. All your departments are right now not integrated enough. And that is unfortunately, जिस जगह भी मैं पाकिस्तान में गया हूँ, whether it's a factory or a building or a hospital or a hotel, this is something very, very glaring for me. बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि support functions, engineering functions are disassociated with each other. So the concept of integrated facility management, जो कि पूरे दुनिया में इस वक्त 1.3 trillion dollars की एक industry है, वो concept आता है. आप you step outside the borders of Pakistan. I have LinkedIn connections in Iran and Afghanistan and a lot of them in India. उज़्बेकिस्तान वगैरह में वहाँ इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, वहाँ बैचलर्स के प्रोग्राम्स भी हैं. पीपल आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट इज़ एंड दे प्रैक्टिस इट. यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा वो इस वक्त. So that's one thing. The other thing is to automate yourself. I am a child of the 1980s.
my life was very hunky-dory because I was using paper documents, Excel, क्या कहते हैं, Lotus 1, 2, 3 इस्तेमाल करता रहा. But facilities management में जब से मैं आया हूँ तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे एविडेंट हुई है वो ये है कि यहाँ टेक्नोलॉजी की सॉफ्टवेयर का यूजेज कितना ज़्यादा है. सो हम सब जानते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को, जो कि ERPs 1950 से चल रही है. उसके साथ साथ ही एक उसी का ऑफशूट CMMS का सॉफ्टवेयर फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए आया. Now we are into the second and the third generation of facilities management software. Unfortunately, I haven't seen any one of them being used over here. And I would request the audience over here, if you are the decision makers, please look into this, because what's going to happen is आपको जो भी presentations आएंगी कि building information modeling शुरू हो जाएगी. यहाँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, BIM जिसको BIM कहते हैं यहाँ. That is going to be very soon, that's going to be implemented. A lot of progressive looking companies are going to implement that. It has to be integrated with software. आपका artificial intelligence is taking over. इस वक्त जो है heads up display की बातें हो रही हैं 2030 में, right? So ये problem पड़ रहा है. You need to upgrade yourself. Everybody, I would request you to look into this also, because this is the future and you might be too late, okay, if you delay it for too long. Okay. The other thing, the third thing that you need, I would suggest you to do is to integrate your service lines. अभी integrate, जिस मैंने आप एक दो slides पहले आपको दिखाया था, it is all disassociated with each other. So basically, facilities management का software, yes, facilities management के processes, they actually integrate everything together. This is one single department, so one single software which actually handles all these things. आपके पास इस वक्त कई buildings में मैंने देख लिया है कि आपके पास building management systems हैं या और कोई IoT से related नई technologies आप लोग introduce कर रहे हैं. Facilities management के software के जो है उसमें ये integrate हो जाता है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन की जो आपके सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी उसकी क्या कहते हैं अपना प्रोविजंस हैं. सो ऑटोमेट, दैट इज़ द फ्यूचर. 10 years from now, 20 years from now, automation needs to be started today to be ready for 10 years later. Otherwise you're just going to be आप गोल गोल घूमते रहेंगे, कोशिश करेंगे कैचअप की, लेकिन कैचअप ज़रा मुश्किल हो जाता है बाद में. So the next one is how to manage your suppliers and vendors, जो कि ये टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं. और ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जो कि ग्लोबल हैं. इस वक्त मैं जो खैर मैं एक कंपनी में भी काम करता रहा जो ग्लोबल थी, लेकिन मैं जो इस वक्त अपनी कंसल्टेंसीज दे रहा हूँ US में और यूरोप में, उसके अंदर ये सप्लायर्स एंड वेंडर्स को जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं. सबसे पहले तो वो सेकॉन्डमेंट्स करवाते हैं, उन वेंडर्स की सेकॉन्डमेंट्स करवाते हैं साइट्स के ऊपर. एक 2 3 महीने, इवन एक साल की सेकॉन्डमेंट्स होती हैं उन वेंडर्स की. मैनुअल्स एंड स्पेसिफिकेशंस डिजिटाइज करते हैं, उनकी रिपोजिटरीज बनाते हैं, उनकी सेंट्रल डेटाबेसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उन सिस्टम्स को. वारंटीज़, एक्सटेंडेड वारंटीज़ दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल आपकी किसी टेक्नोलॉजी की आपकी वारंटी है 3 साल की. व्हाट स्टॉप्स यू फॉर बाइंग अनदर 2 years फ्रॉम द वेंडर? आप 5 साल की करें, उस वक्त तक उसकी मे बी टेक्नोलॉजी जो है या उसका जो इक्विपमेंट है वो उसकी ज़िंदगी 5 साल की होगी. तो हैव द क्या कहते हैं लाइफ साइकिल वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू करें. एंड इट इज़ वेरी कॉमन across the board in other countries. Version, आपके जो वर्जन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि आपके जो सप्लायर्स होंगे वो आपको हर साल दूसरे साल आपको कहेंगे कि जी अपग्रेडेड वर्जन आ गया, नया ले लें. आपको ये थोड़ा सा सेंस चेक करना पड़ता है कि कितनी रैपिडली टेक्नोलॉजी को एनहांसमेंट हो रही है. मे बी यू डू नॉट वांट द नेक्स्ट वर्जन or upgrade of that system. Maybe you wait for the second upgrade or the third upgrade to do it all at once. So don't fall into the trap
of upgrading whenever there is one available. You might need to defer it. Okay, that's smarter strategic management of technology. दूसरा जो यहाँ का प्रॉब्लम जो मैंने 12 साल एक कंपनी में जो कि फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट करी थी, उसमें मैंने जो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम एज अ पाकिस्तानी एंड यूज़र जो रहा है, वो ये रहा है कि आफ्टर सेल्स सर्विस की सपोर्ट जो है वो बहुत क्या कहते हैं क्वेश्चनेबल होती है. बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बट देन यू हैव दैट वन कंपनी विच डज नॉट हैव दैट आफ्टर सेल्स सपोर्ट. इट हैज़ अ गुड सेल्स सपोर्ट, सेल्स बहुत अच्छी कर लेगी, आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी नहीं करेगी. It's not a majority of the companies, it's a minority companies, but be careful about the after sales and backup support. Spare parts की inventory has also been one of my सबसे बड़ा जो मेरा जो क्या कहते हैं pain point रहा है. कुछ companies जो हैं वो spare parts की inventory यहाँ नहीं रखती, वो import करती हैं दुबई से as and when required. So that's something that to future proof your let's say Internet of Things के लिए आपके sensors वगैरह और आपके hardware वगैरह जब आपको सेल करेंगे, be sure that they have spare parts in the country. और end user की जो vendors हैं, ये याद रखिएगा, vendors से बेहतर coaches या trainers कोई नहीं हो सकते. Vendor is a good trainer. Use the vendor as a trainer. You do not need to go to expensive institutes and hire people like me to train you. We are expensive. Have the vendor train your people. And it is a very good practice across the world where vendors are more than willing to train up your people. So use vendors as your trainers. जो यहाँ एक और जो challenge है, and I do apologize for sounding a bit disappointed. लीडरशिप का बड़ा प्रॉब्लम है जी. लीडरशिप में जो है ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्रूफिंग के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप आपको लेना पड़ता है. वो यू नीड टू हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. येस, देयर इज़ ए गट फीलिंग कि यार चलो मैं अपने जानने वाले को रख लूँ, कम से कम वो करेगा जो मैं कहूँगा. बट नो, यू नीड टू हैव प्रोफेशनल्स. यू नीड टू हैव पीपल जो कि who have had the experience. So field experience के लोगों को आप prefer कीजिए. अगर आपने technology upgrade करनी है, you need to have that kind of a future proofing. Education होनी चाहिए, correcting, can do attitude, positive किस्म का एक attitude होना चाहिए. Strategic, technology, यहाँ एक और problem है जी. मेरी generation, I am from the child of the 70s and the 80s, my generation, and one generation after me, we are a bit skeptical about technology. जो millennials हैं, ये Gen Z जो है, वो readily adapt कर लेती है, लेकिन हमारे जैसे जो मैं तो अपने आप को बाबा ही कहूँगा, बाबा जो है इस क्या कहते हैं अपना इंडस्ट्री के, हम लोगों को घबराहट होती है कि जी ये क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई यार, ये तो हम अभी क्या कहते हैं अपना व्हाट्सएप ही सीखा था, ये कुछ और भी सीखना पड़ गया. सो हैव पीपल हु आर रेडली adaptable to upgrades in technology, new technology. That's very important in today's world. ये पहले नहीं था, से 5-10 साल पहले नहीं था, लेकिन ये अब हो गया है प्रॉब्लम. कि टेक्नोलॉजी माइंडसेट होना चाहिए. 3 प्लेयर्स तो हैं, continuous improvement, and of course the willingness to embrace change, and that has been my one of the challenges I've had. So skill sets, on the job trainings करवाएं जी आप अपने लोगों से और अपने vendors से, ज़रूरी है, continuously करवाएं. Academic trainers, managers आपके बहुत अच्छे trainers हैं जी, आपके अपने जो managers हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. आपके इन हाउस में नॉलेज बेस है जो कि बाकी लोगों को के साथ शेयर करनी ज़रूरी है. जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ही इज़ अ गुड ट्रेनर, यूज़ हिम. don't stop at just a manager, but use the head of department. उसके एनुअल अप्रेजल के अंदर डाल दें कि ये कितनी दफ़ा ट्रेन करता है अपने लोगों को. एक्सटर्नल ट्रेनर्स तो हैं ही. फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट, अपने मैनेजर्स की, अपने सुपरवाइजर्स की, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग,
टेक्नोलॉजी की प्रोफिशेंसी के ऊपर ज़रूर करवाइए. एंड लास्टली मैनेजमेंट की स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जी फॉर इन टुडेज़ वर्ल्ड. Please do keep that in mind. People skimp on training expenses. Please don't. So with that, I end my presentation. I hope it was useful. Thank you so much. कोई questions हो तो बता दीजिए. Any questions? Thank you.